All right, Kamal, thank you so much for coming. Thank you so much for accepting my invitation. मैं आपके चैनल्स देख रहा था एंड यू हैव गॉन टोटल क्रेजी यार ऑन एनएफटीज. मतलब फ्री एनएफटीज की बात कर लो, एनएफटी स्पेस की, मतलब आई थिंक यू आर कवरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. यू टोटली गॉन, आई मीन आई एम एज क्रेजी एज दैट, बट मैं उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ कंटेंट around NFT space, but then you are like on it. So I thought, yeah, let's invite Kamal and let's talk to him. I think let's start with a small intro of yours. ना एक छोटा सा intro करते हैं. For people who don't know you. By the way, मैं कमल का channel link डाल दूंगा description में, so you can please go ahead and subscribe. Especially अगर आप NFT में interest ले रहे हो, तो he can really help you a lot. कमल, लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा इंट्रो में स्टार्ट करते. कभी आपका क्रिप्टो में इंट्रोडक्शन हुआ एंड देन एनएफटी क्यों इतना एक्साइटिंग लगती है आपको? Sure. Thank you, Shiv, for inviting me on your channel. So, my NFT journey is a bit weird. So, what happened is, जैसे आपका क्रिप्टो है, you're creating a lot of videos on the crypto. Check your channel. मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका channel. So I started with crypto 2012, 2013 something around. Wow. I heard about Bitcoin. Yeah, so I bought it. उस टाइम पे मैंने खरीद लिया Bitcoin and with a very minimal amount of investment because मैं खुद student था, so I didn't had a lot of fun. So छोटा मोटा अमाउंट खरीद के क्रिप्टो मैंने रख दिया and then I started a YouTube channel of cryptocurrency also. But then because ऑफिस जाना होता था, ऑफिस में गए तो फिर लोगों ने दिमाग घुमा दिया क्या क्रिप्टो क्या ये, and I left the channel. I didn't create much videos on it. And then after 3-4 years मुझे लगा कि यार it was a good opportunity. I should have been focused a bit more on it and I could have done a lot more better. But then NFT came in and I was not very much aware NFTs के बारे में, but then suddenly I saw Gary Vee's video, a lot of his videos, and I realized कि this is not just a way to make money, but ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा जगहों पे यूज हो सकती है. अभी लोग इसे यूज कर रहे हैं एज टू मेक मनी, फ्लिप क्विकली, मेक इथेरियम, बट अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर जाओगे, टेक्नोलॉजी के यूसेज देखोगे, बहुत जगह इंप्लीमेंट हो सकते हैं. एंड दैट्स हाउ आई फेल इन लव विद द टेक्नोलॉजी एंड द टर्म एनएफटी. एंड आई थॉट, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था, बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था एनएफटीज के ऊपर, सो आई थॉट कि अगर मैं इतनी रिसर्च कर ही रहा हूँ, सो रादर देन जस्ट कीपिंग इट विद मी, क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बना के लेट्स शेयर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन आउट टू पीपल. Might help someone out, might not, who cares, but at least let's give the content out. And उसकी वजह से I think YouTube channel थोड़ा बहुत चल गया. अभी it's still growing. Twitter account I started making that up, but yeah, my main goal for my YouTube channel was कि मैं लोगों तक information बता सकूँ about NFTs, because I think अगर आप NFTs में आओगे, if you join projects to get whitelisted, so आपको दिखेगा बहुत सारे Indians हैं, and not just older region of Indians, but 13-14 years of Indian students जो कि NFTs में ट्राई कर रहे हैं, वाइट लिस्ट होने का, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पैसे लेके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को खरीद रहे हैं, उसको फ्लिप करके और पैसे कमा रहे हैं. So I thought कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन साइड में बहुत सारे लोग हैं जो क्यूरियस होंगे अबाउट NFTs. So let's create something जिससे लोग easily relate कर सकें, and I can create something of my own in this. That's what my story was. Yeah, so मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया है कि then जब आप कुछ सीख रहे हो एंड लर्न कर रहे हो, तो अगर आप शेयर करोगे तो इट ऑलवेज हेल्प्स यू आल्सो, बिकॉज आप फिर कई बार आप सिर्फ शेयर करने के लिए यू लर्न न्यू थिंग्स, राइट? एंड देन एज यू शेयर you even learn more. You know, there's a saying that the best teachers are the one who are able to explain it in a simple way, right? So for me, like मैं भी ऐसे लगता हूँ क्रिप्टो स्पेस कि यार मैं शेयर कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में मैं भी सीख रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी उतना सीख नहीं पाता. सो यू सेड कि 2012-13 में क्रिप्टो. सो बाइंग कब आपने किया क्रिप्टो? फर्स्ट बाइंग कौन से साल में किया था? I don't remember the year exactly, but Bitcoin was around $12,000 something. So मैं excited हो गया. 1200 I guess. $1,200. So I might have been a bit later. फिर I bought it at $12,000 जब Bitcoin was at a very high at that point of time. So 2017 की बात है, I guess. Most probably 17, क्योंकि मैंने term सुना था Bitcoin बहुत पहले, पर मुझे उस time पे I was into dropshipping and stuff. So I was like कि क्या है Bitcoin, पता नहीं, छोड़ा, I ignored it. And then later on I decided let's invest, and I invested it around $12,000 something. और मैंने अपनी माइनिंग रिग क्रिएट करी पूरी, कि माइन करेंगे Bitcoin, गॉट अ ग्राफिक कार्ड एंड एवरीथिंग, जो कि सब वेस्ट हो चुका है, कोई फायदा नहीं है उसका.
but I got very excited for cryptocurrency. 2017 में माइन करना मुश्किल था, I think, Bitcoin. मैं एक ग्राफिक कार्ड से I started, so बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए तो, but क्योंकि वो excitement था अंदर की कुछ नया है तो I started. Why didn't you try Ethereum? Mining Ethereum. So when I started, मुझे उस टाइम पे जो समझ आ रहा था, it was Bitcoin usually, कि everyone was talking about Bitcoin. So आप research भी करो तो आपको Bitcoin ही सामने आता था. तो मैंने Ethereum में बाकी altcoins पे इतना focus नहीं किया. But then now in NFTs अब समझ में आ रहा है कि अब मैंने दोबारा से जब research start करी तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी सारी चीजें थी जो I could have done. But ठीक है. And then आपने बोला कि you spend like कुछ $1,200 or $1,000. Which part, like कहाँ पे हो? Do you live in India or in which part of India do you live? Yes, I live in India. कहाँ पे? Like Delhi. which state? Delhi? You're from Delhi, okay. Yeah. Great. Awesome. Yeah. ठीक है, so awesome. And then you got into NFT. NFT is exciting to you. कब हुआ NFT? Like when do you start discovering NFT के बारे में? Like which? So, NFTs came in October or November something. 2021 wow. I started with NFTs. Yeah, I didn't know कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, but because a lot of news were coming out, आपको suddenly इतना सारा पैसा अगर एक जगह दिख जाए तो आपका मन लगता है कि let's research की है क्या. So I started learning about it in November something around that. और फिर I started trying to get whitelisted for few projects. और उसमें I got to know कि this is like it's a good technology is amazing, but अगर आप किसी project में invest करना चाहते हो तो there is whitelist, lot more things that you need to do. You need to be active in their Discord. 24 घंटे आप क्या मतलब 16-17 घंटे आप chat करो तब जाके आप कहीं possible है कि आप whitelist हो पाओगे. I tried it for one project और वो मुझे लगा नहीं कि इतना healthy है. Should not, like nobody should do that according to me. So that's the main reason I turned the whole game towards, rather than grinding in Discord, I changed it to making content. No, it's a good strategy, especially because जैसे कि you're creating content now, you're building a community, and eventually this will lead you to a lot of projects जो अभी तक इंडिया में आए नहीं. They will come and they will find you. They will find Kamal. Yes. That either for advisory or either for community distribution or something like that. So great decision. So like this is not your full time for sure, because you said कि बहुत time लगता है. No. So what do you do otherwise? So currently मैं fund accounting में हूँ. I'm in accounting basically, and now it's around 6-7 years of experience हो गया है मुझे accounting field के अंदर. So I'm trying कि YouTube साथ साथ कर सकूँ. Like it's around 12 to 12 hours of shift. उसके बाद फिर रात को आओ, create videos, सुबह edit करो, फिर office निकल जाओ. So this is how my routine is going on currently. Man, my wish for you is कि आपको एक blue chip NFT लग जाए and then you go all in NFT. Absolutely. Because I strongly believe, and that will happen if you really start like manifesting. I'm sure we will see that probably. Yeah. Maybe before the bull run or maybe next few months, because this is possible, क्योंकि मेरे सामने 100%. मेरे सामने Bored Ape Yacht Club, मेरे सामने CryptoPunk, like CryptoPunk. Of course, I did not CryptoPunk. Listen, CryptoPunk, I don't blame myself because nobody cared about CryptoPunk when it came out, right? Yeah. So but then now today it went to $1 million. So and then Bored Ape Yacht Club. So I blame myself for missing out on a lot of opportunities, because what I blame basically, because मुझे पता था CryptoCryptoConversation आई थी 2017 में, तो I mean एक gamification वहाँ पे हुआ था कि how you can own things, right? But मैं अपने आप को ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वॉल्व किया. I did not get deep कि यार NFT, why is it, what more use cases can be. अगर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे रिसर्च किया होता ना, तो मैं 2020 December, then I would have been more careful. क्योंकि this January 2022 से April तक, no, not 2022, January 2021 से लेके April तक, after CryptoPunk went little popular, there were 3-4 projects which became blue chip. I don't regret missing out on CryptoPunk,
because I truly did not get it that way, even though I heard. But I absolutely blame myself for not paying enough attention to these projects, which came like Board Ape Yacht Club and others, right? And what Hash Mask, right? So गलती हो गई है. तो anyway, so now इस हम लोग conversation को let's see हमारे पास time कितना बचता है. So let's keep it in 3 parts. First, let's start with your holdings, whatever it is, like the project that you're holding and you're excited about. That's how, because I want to see what is your thought process around when you buy a NFT, right? So when you say that I'm holding this, I'll see, okay, why you're holding this, क्यों hold कर रहे हो? And then second, we will talk about how do you do research. And then thirdly, हम लोग बात करेंगे जो blue chip NFTs already हैं and the challenges that. Did you hear about CCO? Yeah, Moonbirds. Moonbirds, huh? Recent So, event, yeah. Exactly. So see, it just goes to show that we are still very early. Like we have just scratched the surface of NFT at least. So let's start with the holdings. Kamal, कौन सी NFTs you're holding and why? Currently, when it comes to holdings वाला part ना, I have been unfortunate here क्योंकि मेरा wallet recently drain हुआ है. So मेरे पास जितनी भी NFTs थी, I think pre-mint के hack की वजह से I connected my wallet to pre-mint hack और उसकी वजह से I think most of my NFTs are gone. So that gave me a lesson also. But ठीक है, if you are in crypto या NFT, I think scam is something जिसके लिए आपको काफी cautious होना ही पड़ता है और ये कभी भी हो सकता है. So now change the strategy totally. But उससे पहले भी I'm not holding any NFTs for a long time right now. जो current market चल रही है bearish market, I don't believe कि until and unless आपने कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ लिया है जिसमें जैसे मूनबर्ड्स टाइप है या कोई बहुत शानदार प्रोजेक्ट है तो आप उसे होल्ड करो. बट करंट बेरिश मार्केट में आई डोंट थिंक सो कि आपका होल्डिंग इज द राइट स्ट्रैटेजी. फॉर मी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज कि मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स में मैं व्हाइट लिस्ट हो सकूं एंड देन ट्राई टू फ्लिप इट एज सून एज पॉसिबल सो दैट मैं एक कैपिटल बिल्डअप कर सकूं अपनी इथेरियम में. बिकॉज राइट नाउ जितना आपके पास ईथ स्टैक होगा उतना बेस्ट है बुल रन से पहले. As, जैसे ही बुल रन आता है अगर आपके पास ईथ पड़ा है तो यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट मेक मनी आउट ऑफ इट क्योंकि उस टाइम पे तो सब गोल्ड है. आप किसी में पैसा डालो पैसा बनेगा ही बनेगा. तो इसलिए मैं बस अभी व्हाइट लिस्ट फ्लिप करने के फोकस में हूँ. एंड देन वंस एक मेरा ईथ स्टैक अप हो जाए फिर मैंने कुछ एनएफटी सोची हुई है जो आई वांट टू गेट इनटू जो मुझे खरीदनी है. आई विल बी इन्वेस्टिंग माय मनी इनटू दैट. अगर बुल रन नहीं भी आता तो एटलीस्ट आई विल बी होल्डिंग दोस एनएफटीज. Yeah, very interesting. So, you mentioned कि white list और मुझे खुद को बहुत like कंटाल आता है कि ये white list के लिए ये करो वो करो, but you're saying कि so like how is it going? Are you able to flip NFTs and how do you do that? Yeah, I am. So currently मुझे बड़ा मजा सा आ रहा है NFT मार्केट में because it's free mint right now. All free mint meta is going on. कोई भी प्रोजेक्ट जो कि प्राइस के साथ लॉन्च हो रहा है it's not getting minted out at all. तो फिर they have to change their strategy to a free mint. या फिर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बहुत पसंद है और आप white listed भी हो but it's a mint price let's say 0.05 या 0.06 तो if you wait for a while वो floor automatically 0.03 0.02 पे पहुंच जाता है. So वो सेंस नहीं बनाता कि अब आप जाके NFT मिंट करो at 0.05 जब आपको वो ऑलरेडी सेकेंडरी पे 0.02 0.03 पे मिल रही है. तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम जितने फ्री मिंट्स का वाइट लिस्ट हो सके. तो उसमें क्या होता है तो आपका पैसा कुछ जा नहीं रहा. मैक्सिमम $3 or $4 इन कैश जाता है उससे ज्यादा कुछ नहीं. सो जैसे ही आपका NFT फ्लिप होता है राइट एट द पॉइंट ऑफ टाइम हाइप काफी ज्यादा होता है तो आप उसे क्विकली फ्लिप कर सकते हो एंड इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो. ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मेक 0.05 0.06 इजीली. तो इसलिए आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग द करंट NFT मार्केट अ लॉट. इंटरेस्टिंग. और ये जो फ्री NFTs है ये आई नो देयर विल बी मल्टीपल सोर्सेज बट एक दो सोर्सेज बताओ. एक तो एक फ्री मिंट NFT का बॉट है ट्विटर पे उसको फॉलो करते हो एंड वेयर एल्स वेयर डू वी फाइंड आउट कि कहां पे फ्री मिंट हो रहा है? हाँ, सो मैं यूजुअली ट्विटर अकाउंट फॉलो करता हूँ अपना. बस आई सी ऑल दी प्रोजेक्ट्स दैट आर कमिंग अप. सो आप एक्चुअली सारे के सारे फॉलो नहीं कर सकते और करने भी नहीं चाहिए सारे. जो बेसिकली जिनके पीछे हाइप है अगर आप सिर्फ उनको फॉलो करके उनमें व्हाइट लिस्ट ट्राई करोगे तो बेस्ट है. अगर आप हर प्रोजेक्ट के पीछे लग जाओगे मुझे हर प्रोजेक्ट की व्हाइट लिस्ट मिले तो एक तो आपको किसी की भी नहीं मिलेगी बेसिकली क्योंकि आप सबके लिए ट्राई कर रहे हो. और सेकंड इज कि क्योंकि प्रोजेक्ट्स के पीछे हाइप नहीं होता इतना तो आप जब उसको फ्लिप करने जाओगे तो उनका प्राइस कुछ बनता ही नहीं. जितनी आपने गैस पे करी है उतना ही आप वापस सेल ऑफ अगर कर पाए तो कर पाए नहीं तो वो भी नहीं होता. सो अगर आपको बेस्ट आई पर्सनली फील जो बेस्ट तरीका है किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को ढूंढने का ट्विटर. अपनी फीड को आप खुद ट्रेन करो बाय सर्चिंग प्रोजेक्ट्स. कीप सर्चिंग फॉर न्यू फ्री मिंट प्रोजेक्ट्स.
आप एक्सप्लोरर पे जाके हैशटैग फ्री मिंट्स डाल सकते हो या NFT थ्रेड्स डाल सकते हो, काफी चीजें मिलती हैं आपको ट्विटर पे इफ यू सर्च ऑन ट्विटर। और उसके बाद जिन प्रोजेक्ट्स में रियल एंगेजमेंट आपको दिख रहा है कि लोग कमेंट कर रहे हैं, देयर इज लाइक एंड रीट्वीट, उस प्रोजेक्ट्स के पीछे फॉलो करो, बिकॉज आजकल ना यूजली मोस्ट ऑफ द ट्विटर अकाउंट्स आर बॉटेड। सो प्रोजेक्ट क्या करते हैं, अभी लॉन्च हुआ 2 दिन में अपने प्रोजेक्ट पे बहुत सारे बॉट्स लगा दिए, और फिर आपको वो एंगेजमेंट देख के पता चलता है कि क्या एक्चुअली बॉट है भी कि नहीं, या इस प्रोजेक्ट का कुछ हाइप है भी कि नहीं। तो आई वुड से कि ट्विटर को जितना ज्यादा आप यूज करो उतना बेस्ट है। या आई थिंक आपने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे यू हैव मेंशन कि कपल ऑफ ट्विटर अकाउंट्स है, कहाँ से फ्री मिंट मिल सकता है। यस, आर द सेम आपका जो सोर्सेस? यस एक तो मैं ट्विटर तो फॉलो करता ही हूँ, फ्री मिंट वाला बॉट जो आपने बताया 100% आई फॉलो दैट अकाउंट। सो उससे आपको पता चलता रहता है कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है। देन देयर इज अ वेबसाइट और टूल कॉल्ड व्हाट्स मिंटिंग डॉट लाइव। व्हाट्स मिंटिंग? या वो भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा इस टाइम पे करंट मिंट हो रहा है, बट उसमें ये है कि क्या अभी मिंट हो रहा है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है। उसके लिए आप बेसिकली रेडिट और स्नाइपर या फिर देयर आर फ्यू मोर टूल्स जिनमें आप जाके चेक कर सकते हो कौन सा प्रोजेक्ट अपकमिंग लॉन्चिंग में है। बट सारी न्यूज उसमें अपडेटेड नहीं होती हर एक टूल में। तो बेस्ट है कि आप ट्विटर पे जितना ज्यादा सर्च मारोगे आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें दिखने लग जाएंगी ट्विटर के ऊपर। तो उतना आपका मतलब जितना आपका ट्विटर ट्रेंड होगा फ्री प्रोजेक्ट्स दिखाने के लिए, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एंड ये जो फ्री मिंट करने के लिए मोस्टली आप इथेरियम पे करते हो, सो डू यू यूज एन एम्प्टी वॉलेट लाइक अ ब्रांड न्यू वॉलेट और एग्जिस्टिंग वॉलेट मिंट करने ब्रांड न्यू वॉलेट, नाउ आई हैव स्टार्टेड अ ब्रांड न्यू वन। अभी मेरा वॉलेट ड्रेन हुआ बट बिकॉज ऑफ पेमेंट हुआ वो, वैसे आई यूज्ड टू डू इट ऑन अ सेपरेट वॉलेट ओनली। एक मेन वॉलेट अलग, एक burner wallet is a different one. So now what I'm doing is कि सिर्फ 10 या 14-15 डॉलर्स I keep in my one wallet जो कि मेरा burner wallet है, और मैं सबको वही एड्रेस देता हूँ कि वाइट लिस्ट के लिए I mint the NFT। अगर मुझे फ्लिप करना है तो फ्लिप इट क्विकली फ्रॉम देयर, और जो भी ETH बनता है उसे अपने मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया। नहीं तो इफ आई वांट टू होल्ड दैट NFT तो मैं उस NFT को ट्रांसफर कर लेता हूँ मेन वॉलेट पे, कि जब तक मैं होल्ड करना चाहूँ तब तक होल्ड करूँ, बट एटलीस्ट मेरा मेन वॉलेट कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ना मैं उसे पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, ना फिर मैं इसे किसी प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ। बट मैंने रिसेंटली सुना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट, बेसिकली आपका हैक होता है कि आप किसी भी NFT की वेबसाइट से जाके लिंक करते हो, राइट? जब आप लिंक करते हो जो अप्रूवल मांगता है मेटामास्क आपसे, सो नोबडी रीड्स कि वो अप्रूवल क्या मांग रहा है ना? So if it's a mint, it will say mint, but if it's set approval for all, इसका मतलब आप उनको अप्रूव कर रहे हो कि आप सब कुछ ले सकते हो मेरे अकाउंट से। Nobody sees that क्योंकि बड़ा छोटा छोटा सा लिखा होता है ग्रे एरिया में, इसलिए पता नहीं चलता किसी को। बट नेक्स्ट टाइम आप मिंट करो तो सी दी विंडो वंस कि वो कह क्या रही है आपसे। इफ इट सेज सेट अप्रूवल फॉर ऑल, रिजेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो आपका सारा का सारा क्रिप्टो और आपका सारा का सारा NFT अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। सो अब जस्ट अगर इफ इट सेज मिंट ओनली देन इट्स स्टिल सेफ। बट बेस्ट इज कि आप ईथर स्कैन से जाके मिंट करो। अगर आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से मिंट करते हो विच इज ऑन ईथर स्कैन, तो आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग हैक्ड इज एक्सट्रीमली लो। आई थिंक इट्स जीरो, क्योंकि ईथर स्कैन से आप कोई परमिशन सिर्फ मिंट की परमिशन देते हो, आप उनकी वेबसाइट पे जाके परमिशन नहीं दे रहे। सो इट वुड बी मच मोर सेफर। सो बेसिकली आप जो मिंट करते हो इथर स्कैन से मिंट करते यस, अब मैंने स्टार्ट कर दिया ईथर स्कैन से मिंट करना। यस, हो, तो उसमें गैस वो में फास्टर भी रहता है। हम्म, नहीं नहीं, गैस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है, ईथर स्कैन का लिंक आपको जल्दी मिलता है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो सबसे पहले ईथर स्कैन का लिंक देगा, उसके बाद वेबसाइट देता है बाद में। सो अगर आप ईथर स्कैन पे जाओगे तो आप सबसे पहले वाले हो जाओगे बंदा जो कि मिंट कर सकता है। तो मुझे लगता है बड़ा एडवांटेज होता है उन बंदों के लिए जो सबसे पहले मिंट करते हैं, करेक्ट। क्योंकि वो फ्लोट्स का प्राइस सेट कर रहे होते हैं, है ना? तो वो जैसे ही मिंट करेंगे, जैसे अभी रिसेंटली 1 ETH FP मिंट हुआ, तो जैसे ही उन्होंने मिंट किया दे सोल्ड इट। इनिशियल वाले बंदों ने अराउंड 0.25 0.28 पे सोल्ड किया, बट जो उनके बाद आ रहे थे वो 0.06 0.05 ऐसे फ्लोर गिर गया नीचे। सो अगर आप फर्स्ट हैं तो आप ज्यादा बना सकते हैं, अगर आप लेट हो रहे हैं तो इट वुड बी लेस। बट वो इट्स मोर टुवर्ड्स द बॉट्स। बॉट्स भी आ जाते हैं कई बार गेम में बीच में फटाफट मिंट करने के लिए। बट हाँ, ईथर स्कैन इज स्टिल प्रॉफिटेबल और क्विकर। जस्ट टू गेट एन आइडिया, जो भी देख रहा है, लाइक इफ यू डोंट माइंड, ये जो फ्री मिंट है, लाइक कितने ईथर वर यू एबल टू मेक? करंट मार्केट में आप ज्यादा नहीं बना पाओगे। आई वुड से $50 to $60 आप एवरेज बना सकते हो अगर प्रोजेक्ट के पीछे थोड़ा बहुत हाइप है तो। बट अगर प्रोजेक्ट के पीछे काफी हाइप है, जैसे अभी बनी थी था, इट हैड अ लॉट ऑफ 500K प्लस फॉलोअर्स इनके अकाउंट पे, और जब उन्होंने मिंट किया तो उनके जो उन्होंने स्पेस रन किया उस पर अराउंड 2000 से ऊपर लोग थे। अगर एक प्रोजेक्ट के स्पेस पे 2000 से ऊपर लोग हैं तो उसका फ्लोर अच्छा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि काफी कम्युनिटी स्ट्रांग है। इसलिए वो मिंट अराउंड 0.28 0.29 पे लोग फ्लिप कर पाए इनिशियली। So which made I think around $300-400 भी आप बना सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप कब मार्केट में मिंट करके उसे फ्लिप कर रहे हो। और ये व्हाइट लिस्टिंग के लिए isn't it a hard work? like
Because most of हाँ, these free mint products are like saying नहीं white list हो जाओ. व्हाइट लिस्ट इज वेरी हार्ड. अगर आपको व्हाइट लिस्ट होना मतलब बेसिकली आपको टोटली उनके ट्विटर से एंगेज होना है. और जो करंट आ रहे हैं उनका डिस्कॉर्ड होता नहीं है. बहुत कम प्रोजेक्ट्स है जो डिस्कॉर्ड के साथ आ रहे हैं, वरना यूजुअली 3-4 दिन के अंदर वो अपना मिंट भी लॉन्च कर देते हैं. सो इट बिकम्स रियली हार्ड टू गेट व्हाइट लिस्टेड. बट जो मतलब आई वुड से कि फ्री मिंट से फिर भी सेफ रहे थोड़ा सा, क्योंकि इट इज वेरी वेरी रिस्की कि अपना वॉलेट कनेक्ट कर रहे हैं, इट कैन गेट ड्रेन्ड, वेरी रिस्की. सो बर्नर, ऑलवेज यूज बर्नर फॉर दैट. बट आप फॉलो करो इन्फ्लुएंसर्स को, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स है मार्केट में. इफ यू सी सम इन्फ्लुएंसर्स टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, 3 4 5 6 सब इन्फ्लुएंसर एक ही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इट कैन मेक यू लॉट ऑफ मनी. और ये इन्फ्लुएंसर्स कहीं ना कहीं with a huge following, maybe, and maybe sometimes Yes. maybe they have like white listing or they have some sort of allocation maybe. ऐसा भी हो सकता है. I think that helps the project and the influencers both, right? Sell Yeah. करने के लिए. And what about Solana NFTs? You're not taking कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें? मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आया नहीं. मैंने बीच में सोलाना समर आया था तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू सोलाना एनएफटीज. किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आई गॉट वाइट लिस्टेड. काफी हाइप था उस प्रोजेक्ट का. आई मिंटेड एंड मेरे पास स्टिल पड़ी हुई है वो एनएफटी. इट्स इन लॉस राइट नाउ फॉर मी. तो मुझे सोलाना समझ में भी नहीं आता. वहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा दिखता नहीं है मुझे. और मैं काफी टाइम से ईथ में लगा हूँ, तो आई फील कि मैं आई एम मोर कंफर्टेबल ईथ टुवर्ड्स ईथ साइड. बट आई डू टॉक टू सोलाना एनएफटी प्रोजेक्ट्स, try to get whitelist from them and distribute it to community. So I try, but not very much into Solana. Yeah, I mean the same feeling. I don't know, मेरे को Solana NFTs के लिए वो excitement या energy नहीं आती. It fake लगता है थोड़ा सा. But of course it's just another blockchain. But it's just like कि वो value नहीं दिखता कि यार, क्योंकि same white listing की मेहनत सब कुछ आप करने वाले हो. So why not put that time on a premium blockchain like something like ETH? So that is what is in my mind. And so whom are you following? Like who? कुछ ऐसे लोग जिनको you are like, one is Gary Vee for sure. He started talking about NFTs big. और कौन से people that you think are doing great and आप follow करते हो and you think you've got benefits. So after Gary Vee, जब मैंने research करना start किया, I started with the Braithwaite. He and Sebastian करके, there's a guy who used to do dropshipping, now is getting into NFTs. Like a lot of businesses have done. So started following these people. इनके through I got to know a lot more people like Kosher Plug, Bento Boy. Then there's Champs Only. So there are few people. NFT Lama, I think very reputed person. Project Godzilla का Shan, he's again an amazing person. These are the few people that I'm following right now, जिनसे मुझे काफी information, अगर आप उनको follow करते रहो तो you get to know a lot of stuff. So for me it has been Zeneca. Zeneca, I forgot to mention. Yeah. And so he was the one of the OGs, right? Yeah. And then the guy with the meta key, I don't know can't remember his name. Uska kya. So these are really, by the way, Bento's Boy and these guys all came later on. And one of the good thing that they did is कि उन्होंने खुद की NFTs launch कर दी. Okay. And so उनको benefit मिला because now, like वो time पे NFT का bull run था, right? So let's say Shiv coming up with 10,000 PFPs and selling at 0.1, which will sell, by the way, because it is a bull run. And then you're using the same community to partner with other projects. It's a very smart way of launching an NFT because you're not adding any other value. Like you're not Gary Vee. Right. Agreed. Yeah. So, but then this is also a trend. Like I'm not criticizing it. I think it's a good way because as long as you provide कर रहे हो value to the community and it's all good. जहाँ तक scam नहीं कर रहे हो, I think it's all good. Value might take some time because let's see if I launch an NFT today and it is possible कि आज 0.1 का है and then it won't do anything for the next 9 months. And maybe after 2 years it becomes like 1 ETH or something. Because the thing about NFTs is the power is always in your hand. कि कब आप उसको value add कर दो, right? Maybe कुछ बड़ी कंपनी से partnership कर दिया आपने and then the value flows in. That's a good one. What are the blue chip NFTs? So Bored Ape, let's talk about blue chip कि ये लोग कर क्या रहे हैं. I think that's, and the reason मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ because somehow they are paving the path for other
NFTs project, right? Yes. So, for example, BAYC, CCO Commons, right? So, and they bought CryptoPunk also, Lava Labs. What do you think these blue chip NFTs are doing? Like, how do you look at these guys? BAYC and Moonbird जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला. Do you think they are setting an example for others, or like what is the ultimate plan for PFPs at least? Only PFPs. So only PFPs in the long term मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा होगा only PFPs अगर सिर्फ एक project सिर्फ PFP के साथ आता है. I don't think so it would be a lot more beneficial for the project क्योंकि अब people are getting more intelligent. सबको पता है कि utility should be there. There was a time जब आप merge को या breeding staking को utility कह सकते थे, which people are not interested in anymore because people know कि ये बस it's just a gimmick, marketing gimmick और कुछ नहीं है. आप अपने breeding करके अपनी basically NFT को और बढ़ा रहे हो, dilute कर रहे हो उनका supply, which does not make sense. Staking is again not for me. Merge, staking, breeding, इस type की कोई भी utility is not a utility, it's just a marketing gimmick. But yeah, when it comes to BAYC, the way Yuga Labs is doing right now stuff, right? So उन्होंने अपना इतना बड़ा volume में other deed खोला, sold it out completely in the bearish market, made a lot of money out of it. Now they're again going to do the same thing again very soon in future. मेरे ख्याल से 100,000 land plots more they are going to give out again, and pretty sure they'll get sold out again. The way they are doing it. So, but the marketing and the kind of they're creating basically an environment and exclusivity कि अगर आपको BAYC club में आना है, these are few ways that you can get in. But साथ साथ when you have the profile picture, आप एक अलग तरीके से देखे जाते हो मार्केट में कि यार this guy, but basically anyone can have that profile picture. Usually what I've seen is जितने भी लोग BAYC hold करते हैं, they do mention their wallet also, so they can be known कि definitely this person has, but they get a different kind of reputation, and that's all NFTs is about मेरे हिसाब से कि आपको मार्केट में एक अलग मतलब everyone wants कि मेरे को लोग थोड़ा सा different तरीके से देखें, social esteem basically, और वो आपको NFTs बहुत ज्यादा empower करता है बैकएंड पे. अगर आप मून बर्ड्स की एक NFT लगा के रखी हुई है, people will definitely trust you. उनको लगेगा कि यार this बंदा knows what he is doing in NFTs, rather than आप कोई भी एक ऐसी NFT लगा के बैठे हो तो जो that nobody wants, है ना? So I think the mindset is towards the social esteem, कैसे वो और बढ़ाना. Yuga Labs is doing a great job on that. I think इनके yeah, no, go ahead. Sorry. Okay, so I was about to say कि कोई मेरे ख्याल से I don't remember, but party भी होने वाली है BAYC which has created again a lot of hype. So these kind of things that they're doing and they're calling celebrities in, जिससे कि marketing में बहुत ज़्यादा benefit मिलता है उन्हें. Yeah, I mean, let's say कि आपने अगर Doodles जैसे प्रोजेक्ट आपने होल्ड किया हुआ है, आपने उसको प्रोफाइल पिक लगाई है, या फिर CryptoPunk या फिर BAYC या फिर और भी King Crown, तो all these जो मतलब top 10 प्रोजेक्ट्स है, राइट? अगर आप उसको होल्ड करते हो, so at least जो NFT जिनको पता है वो आपको अलग नजरिए से देखते हैं. They think of you as an OG. So a lot of CryptoPunk holders, right? उन्होंने खुद की अपनी NFTs लॉन्च किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है. So I think वो OG वाला खिताब मिल जाता है. But I do think that it's too early right now, and for this NFT space, or some of the things जो हो रही हैं, I think we will laugh at it when we go back after 2 years. Just like ICOs को हम लोग अभी हंसते हैं, we will laugh like ये क्या हो क्या रहा था. But but I mean, yeah, there are people who will make money, who will but yeah, I just hope that I think bear market is a good thing because काफी लोग सावधान हो गए हैं, नहीं तो I'm sure कि और भी कचरा होता था यहाँ पे. ये जो फ्री मिंट जितने भी हो रहे हैं ना, सब कोई फ्री मिंट नहीं होता. सब लोग एटलीस्ट 0.1 0.08 0.08 was a 0.08 was a standard. 0.08 ETH का है और 10,000. I minted at 0.4 also. 0.4 जब बुल रन चल रहा था. Yes, so लोग किसी भी अमाउंट से आ रहे थे, कुछ भी. 0.4 ETH, yes. और उस टाइम पे ETH was at $4,000. So लोग कुछ भी लेके आ रहे थे, and उसका फ्लोर भी went to 1.2 ETH something. So people were launching anything they wanted, और bull run में सब चल रहा था. But now bearish market, I think bearish market is very very best if someone wants to build. किसी को अगर सीखना है, किसी को learn करना है about NFTs, और because यहाँ पे आपका focus नहीं हिलेगा, आपके पास कुछ है नहीं कि यार इस प्रोजेक्ट में जाना है, इस प्रोजेक्ट में जाना है.
there are very few projects जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और very few projects जिनके पीछे हाइप होता है, तो आप उन पे फोकस भी कर सकते हो, साथ साथ आप सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो इस टाइम पे, आप लोगों से एक्चुअल में कनेक्ट कर सकते हो rather than just sitting and thinking कि यार मैं इस प्रोजेक्ट में वाइट लिस्ट हो जाऊँ, उस प्रोजेक्ट में वाइट लिस्ट हो जाऊँ. आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग बेयर मार्केट बिकॉज आई थिंक जब बुलिश मार्केट आएगी दिस इज द वेरी राइट टाइम फॉर एवरीवन जो भी वीडियो भी देख रहा है. अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू डू इट, ताकि जब आप बुलिश मार्केट आए तो आपके वो कनेक्शंस जो आप इस टाइम पे बनाएंगे उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. Absolutely. Good. It's a very good conversation, Kamal. Thank you for doing this. Anything that you want to share? कुछ जो maybe we haven't discussed that you think is important, is interesting, कुछ बताना है? Nothing as such. मेरे ख्याल से अगर आप अभी बिगनर हैं NFT में, I would say because currently beginners and intermediate are the people who are basically struggling. तो प्लीज स्कैम से बचिएगा. बर्नर वॉलेट जरूर बनाइएगा अपने लिए. एक बर्नर वॉलेट इज बेसिकली आप एक नया वॉलेट बना रहे हो, कुछ भी नहीं होता. उससे आप बेसिकली थोड़ा सा उसमें $10-12 रख के अपना मिंट करके NFT फ्लिप करके पैसा बना सकते हैं. साथ साथ दिस इज द राइट टाइम कि आप लर्न करें चीजें. आई हैव सीन कि पीपल आर स्टार्टेड डूइंग स्पेसेस अ लॉट, so try to join the spaces like for projects to get whitelisted, and I think it is a very amazing way to make connections. So अगर आप सोच रहे हैं कि because मेरे को पता है कि when I started I didn't know anyone, so I was confused कि मैं कैसे start करूं. उस टाइम पे there were very less spaces going on. अब there is a new trend कि अगर आपको whitelist होने किसी प्रोजेक्ट के लिए तो आप space start कर दो. उसमें लोग आएंगे, फाउंडर्स देखेंगे कि आप वैल्यू दे रहे हो, क्वालिटी दे रहे हो, they start giving you whitelist. Start joining those spaces, start talking to people, start making connections. The more connections you make, the more benefit it is for you in future. As for me, Awesome. I think NFTs थोड़ा नया है, काफी लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्रिप्टो में भी. बट माय कोशिश हमेशा रहती है कि भाई आपको NFT का वो रोक लगा दूं मैं आपको. So it's exciting. Thank you so much, Kamal. मैं कमल का पूरा YouTube लिंक एंड ट्विटर डाल दूंगा because he is creating a lot of content on NFT, so I'm sure आपको काफी हेल्प वहाँ पे भी मिलेगी. Thank you so much, Kamal. Let's keep doing this probably after some interval of time, and as the space grow, we hope we keep doing this. Sure. Thank you for inviting me on this channel, man. I would love to do this again. It is very fun because I think a lot more people get to know about NFTs. More we are able to give out education about it, so I love it. We can do it anytime you want in future also. But thank you so much for inviting me for this. Absolutely my pleasure. Video. Absolutely my pleasure. Thank you so much, Kamal. See you soon. Take care.